Okay. Is everyone able to hear me properly? Okay. Yes, sir. ठीक है, recording भी चालू है. All right. So welcome to today's session. Today we are going to continue our discussion about precision, recall, confusion matrix, all of those things that we were doing in the last session. We're going to continue our discussion and we're going to talk about a really important topic, which is ROC and AUC. Right. So to get started, we'll start with a small story. So this is a story from World War II, when we know that uh, there were many uh, in the World War II, there were many aircrafts that were being used to bomb some cities, some uh, places where there are enemy camps and all of that. Okay, and radar technology was developed at that time to find out if there is a aircraft in the nearby area or within the vicinity. And if there's an aircraft, maybe we can send some counter forces to either bring down the aircraft or at least have some people evacuated. Some measure that need to be taken based on who all are seen in the radar. Okay. Now, the main goal of that radar technology was to detect incoming enemy aircrafts. Okay? And there were people who were radar operators who would turn their signals, the device which sends out the signals, the radar signals, it would look something like this. And they would just try to turn it towards wherever they feel that the enemies might come from. Okay. And then that being a circle, it basically sends out radar in this area. Okay. And as you can see here, the places where you see the blips, right? So these are the places where there are aircrafts, right? You have seen this in many movies, you have seen this in games and everywhere. Okay. Now the person who is operating, it is up to him to decide whether when he sees the blip, is it really a aircraft from the enemy or is it not an aircraft or just an error in the uh, device itself. Okay. And as you can imagine that because this is a classification, there is going to be some true positives, there's going to be some false positives, there's going to be some true negatives, and there's going to be some false negatives as well. Okay. Now now it really started from this particular technology, and then the idea of ROC was, it dates back to this particular big example in history. So the goal of these two researchers, which is Norbert Wiener and Gondel Wilhelm, was to just find out what is the performance of the human observers, right? So there's a human observer, maybe there's a person A, there's a person B, and there's a person C. And all of these are just human observers who are going to be looking at these devices and tell if there's a enemy coming in, coming out or not. And based on that, they would keep track of how many times they are being able to tell us correctly if the enemy aircraft is coming in or coming out and so on. Okay. So, and when there's human involvement like this, obviously there's going to be a lot of noisy data. Also, the environment changes. If the environment is different, if it's cloudy or maybe there's an overcast, in that case, the signals might not be properly sent and the detection will become difficult. Okay. I mean, right now, obviously, I'm not saying that if there's cloud, data will not work. So, anyways, but it was difficult to check if the signals are noisy or not. Okay. Now, the ROC, like I said, the story dates back to that particular incident, and it was used to identify or basically do a trade-off between detecting enemy aircraft and minimizing the false alarms, right? So अगर सच में enemy का aircraft आ रहा है and if you are able to detect it, very good, but
there's no aircraft and you're detecting it and then you're sending out the countermeasures, that means you're wasting your resources. And resources in World War II were really limited for some of the countries. Okay. So there was a trade-off between correctly being able to identify and then minimizing the false alarm. अगर आप false alarms minimize करने जाते हो, तो maybe there were cases sometimes when the enemy aircraft is present and you're not detecting him, right? So there's a trade-off. There needs to be a balance between these two. All right. And there's a curve called as ROC curve, which basically represents the trade-off between TPR and FPR. So TPR here being true positive rate, which is sensitivity, या फिर आपका recall, correct? So true positive divided by true positive plus false negative, correct? So that's the sensitivity or recall. And other one is the FPR, which is the false positive rate. The formula of this is false positive divided by false positive plus true negative. We'll see the formulas and all of that. Okay. So we want to do this plotting to see who are the good classifiers. ठीक है, so there's human A, human B, human C. इन तीनों में से कौन अच्छा क्लासिफायर है वो आइडेंटिफाई करना है. Now the same concept comes into the classification task that we do in these days. Correct. अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है आपको, whether there's going to rain tomorrow, whether this house is going to be sold, whether the stock is going to go up or down, whether uh, I mean any of the classification tasks that you can think of. So बस binary classification करना है इसमें, ऐसे नहीं कि multi class classification करना है. Okay. So ROC curve will look something like this. आपके पास में ट्रू पॉजिटिव रेट रहेगा जो रहेगा आपके y एक्सिस पे, और फॉल्स पॉजिटिव रेट रहेगा x एक्सिस पे. ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब कि सेंसिटिविटी और रिकॉल दोनों, ये तीनों एक ही चीज है. ठीक है, ओनली डिफरेंट नेम्स. ट्रू पॉजिटिव रेट, सेंसिटिविटी एंड रिकॉल आर सेम. तो यहाँ पर रिकॉल है आपका. ओके. ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स पॉजिटिव रेट का क्या है? फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल हाउ टू रिमेंबर दिस. आप लोगों को कंफ्यूजन मैट्रिक्स याद है? ठीक है, तो ये अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स है आपका, तो y एक्सिस पे है आपका ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, कमिंग बैक हियर, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट पूरा. ठीक है, दिस पार्ट फुल. ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. और x एक्सिस पे है आपके फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, दिस पार्ट. Okay, so first you have this, okay, and then on x-axis you have false positive rate, which is false positive divided by false positive plus true negative. Okay, तो ये आपका जो पूरा डिसीजन ट्री है, सॉरी आपका जो पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो कवर हो गया. चारों मैट्रिक्स यूज हो गए यहाँ पे. ठीक है, ऑलराइट. तो अब ये प्लॉट बनता कैसे है वो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो you have this true positive rate which is your recall, and then you have false positive rate which is just false positive rate. तो imagine करो, okay, you already know that the true positive rate is always going to be between 0 and 1. ठीक है, so इसकी वैल्यू हमेशा 0 and 1 के बीच में रहती है. फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू 0 and 1 के बीच में रहती है. राइट. ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है, दिस इज द रैंडम क्लासिफायर. मतलब 50-50% चांस. अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है और मेरे पास में कॉइन है और मैं कॉइन फ्लिप करके बोलता हूँ, अगर हेड्स आता है तो कल बारिश होने वाली है, टेल्स आता है तो कल बारिश नहीं होने वाली है. दैट्स अ रैंडम क्लासिफायर. ओके, सो वो रैंडम क्लासिफायर का जो आरओसी कर्व है वो है ये डॉटेड लाइन. ओके, अभी के लिए बस इतना समझ लो, मैं थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनाते हैं इसको. ठीक है, तो हमारा गोल ये होना चाहिए
कि हम जो भी क्लासिफायर मॉडल बनाएंगे, ओके, दैट क्लासिफायर मॉडल शुड बी बेटर देन द रैंडम क्लासिफायर. Okay, so if I want to be better than the random classifier, then my ROC curve for different models should look something like this. So maybe this is one of the models. ये orange color का जो दिख रहा है, that is model 1. ये green color का दिख रहा है, this is model 2. Blue color का दिख रहा है, this is model 3. Okay, these could be decision tree models, this could be logistic regression models, or maybe ये decision tree है, ये logistic regression है, anything, right? So but basically you have three classification models, binary classification models. Okay, when you go towards upside of this, towards the upper side of this random classifier, you are moving towards a better classifier या फिर better model. When you go below this, it's worse, and it's better to even use, not even have a model. In this case, अगर इसके नीचे आपका classification का ROC कर्व आता है, तो उस मॉडल की जरूरत भी नहीं है. You can do better by just flipping a coin. All right, so anything about this is better. All right, तो अभी हम लोग कोड के ऊपर जाएंगे और फिर वहां से हम लोग पढ़ेंगे कैसे बिल्ड करते हैं इसको. This link is shared with you all. I'll just send it on the chat as well. Okay, so these are the true values. Let me just put them in maybe an Excel, not an Excel sheet. Let me just put this into, not this sheet, create a new one. Zero, zero है, zero, one, 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 okay, zero. This is what? This is actual. Okay. And this is predicted. Get the predictions from here now. Here, right? So these are some of the predictions that I have here. सबसे पहला है 0.21, दूसरा है 0.38, 0.42, 30, 0.31, 0.31, 37. मैं लिखते हैं. तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. ओके, so let's say 0 is it's not going to rain tomorrow, 1 is going to rain tomorrow, and this is the probability that the model is telling us. आप decision tree जब build करते हो तब आपको जो leaf level पे होती है, you can get the probabilities too. It's, you just have to count the number of times you have positive and number of times total number of values that you have, so that will give you the probabilities. तो इमेजिन करो यहाँ पे डिसीजन ट्री आपने मॉडल बिल्ड किया और आपको प्रोबेबिलिटीज मिली है ऐसे. ठीक है, डिसीजन ट्री में प्रोबेबिलिटीज मिलती है, यस नो? Yes, sir. ओके, गुड. सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. 0.21, so 0.21 का मतलब है देयर इज अ 21% चांस दैट दिस इज 1. 0.38 का मतलब है देयर इज 38% चांस दैट दिस इज 1. 49% chance that this is 1. Okay, 51% chance that this is 1. 45% chance that this is 1, and so on. Okay, this is what that model is. अभी क्या चल रहा है? What I'm going to say is, now I have to decide कि कितने चांस पे मुझे बोलना है कि बारिश होने वाली है कि नहीं. Okay? So this is the predicted probabilities, by the way. So this is the probabilities called P here.
So this is probabilities. Okay, let's say I say कि अगर 20% से ज्यादा है, if more than 20% है, तो it's going to rain. All right. So let's put the values here now. More than 20% है तो it's going to rain. Prediction कितना है यहाँ पे? 21 है, तो it's going to rain. Prediction हमारा 1 है, यहाँ पर prediction 1 है, यहाँ पे prediction 1 है, यहाँ पे prediction 1 है, यहाँ पर भी 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 1 है, यहाँ probabilities prediction 1 है. ओके, तो ये आपके predictions है जब आपने बोला कि 20% इज माई थ्रेशोल्ड. इस मॉडल के लिए आई सेड 20% के ऊपर जितने भी वैल्यूज रहेंगे उसके ऊपर मैं बोल दूंगा कि इट्स गोइंग टू रेन टुमारो. इसका मुझे अभी क्लासिफिक मैट्रिक्स बनाना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या क्या रहता है? सो दिस इज यहाँ पे आ गया आपका प्रेडिक्टेड. तो टेल मी फर्स्ट, इसमें ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं? एनीवन? ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कैसे बनाते हैं. ट्रू पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पे? 6. 6 ट्रू पॉजिटिव्स, राइट? 3 4 5 6. ओके, 6 ट्रू पॉजिटिव्स हैं. फॉल्स पॉजिटिव्स कितने हैं? 4. 4 फॉल्स पॉजिटिव्स. ट्रू नेगेटिव्स कितने हैं? सॉरी, फॉल्स नेगेटिव कितने हैं? 0. 0. और ट्रू नेगेटिव कितने हैं? 0. ऑलराइट. तो अभी हमको सबसे पहले निकालना है इसका टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट. ट्रू पॉजिटिव रेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ये फॉर्मूला है. और हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है उसका फॉर्मूला क्या है? फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय False positive plus plus true negative. good. Okay, tell me now, what is the value of this? ये कितना आ रहा है? 1. ये 1 आ रहा है. Okay, what about this? ये भी 1. ये 1 आ रहा है. 4 divided by 4, 1. Okay, yes. Yes, sir. Okay, good. ठीक है, तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव रेट, ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव रेट. अभी हम लोग जाते हैं हमारे आरओसी कर्व के पास. ठीक है, तो आरओसी कर्व पे क्या है? ट्रू पॉजिटिव रेट है और फॉल्स पॉजिटिव रेट है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट कितना है? 1, मतलब ये. ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना है? 1, मतलब ये. तो ये डेटा पॉइंट हो गया वो. यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके ओके, सो दैट इज दिस डेटा पॉइंट. तो ये हो गया हमारा पहला डेटा पॉइंट. अभी हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ाते हैं अभी. ठीक है, सो लेट मी जस्ट मेक श्योर ये थ्रेशोल्ड्स ना यहाँ पे मुझे पता करने हैं एक बार. गिव मी अ सेकंड so that we can mimic what is present in this graph. वो ग्राफ में क्या चल रहा है वैसे ही करेंगे हम लोग. We should be able to see. I want to know this thresholds क्या क्या है. The next one is 0.4 and so on. Start with 0, फिर 0.1, फिर 0.1, फिर 0.2. ठीक है, तो हमने 0.2 के लिए देखा. अभी हम लोग देखते हैं 0.3 के लिए. ओके, सो 0.3 के लिए लेट्स ट्राई टू सी क्या आता है हमारा. नाउ I'll just go back here. I'll say 0.3. 0.3 मेरा थ्रेशोल्ड है. ओके, 0.3 अगर थ्रेशोल्ड है तो यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या आएगा मेरा? 0. करेक्ट, 0. क्योंकि ओके यहाँ पे कितना आएगा प्रेडिक्शन? 1 1 1. 1 1. 1 1 1 1
1, एवरीवेयर एल्स 1, करेक्ट। तो ये तो हो गया मेरा पहला वाला सबसे, इसको मैं थोड़ा सा just put it, just trying to see if there's a place I can put it. ठीक है, अभी ये हो गया ना हमारा काम, तो फिर आई जस्ट मूव इट हियर। ठीक है, नेक्स्ट टू fill this for, let's try to fill this for the second one, इसके लिए फिल करते हैं अभी। ठीक है, इसके लिए ट्रू पॉजिटिव कितना है, सेम। फॉल्स पॉजिटिव कितना है, फॉल्स पॉजिटिव कितना है, फॉल्स नेगेटिव कितना है, सॉरी ट्रू नेगेटिव कितना है, ये कितना है, 0. 0। ओके, तो इसका ट्रू पॉजिटिव रेट कितना है, 1। फॉल्स पॉजिटिव रेट कितना है, 0.3 डिवाइडेड बाय 4, 0.75, करेक्ट, यस और नो। तो ये हो गया Yes, sir. 1, 1 और 0.75। नाउ लेट्स गेट बैक हियर, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो वैल्यू है 1, ओके, ट्रू पॉजिटिव की, और फॉल्स पॉजिटिव की 0.75। तो यहाँ पर कहीं तो भी है, तो वो यहाँ पे प्लॉट में दिख नहीं रहा है। थिंक व्हाई इज दैट, बिकॉज थ्रेशोल्ड्स के ऊपर हमने ये किया, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड को ये किया। लेट मी जस्ट चेक किया, ट्रू पॉजिटिव, सेकंड, लेट मी जस्ट चेक किया। पॉजिटिव रेट है, तो इसका 1 है। लेट मी जस्ट चेक किया, I want them to be side by side. तो 0 थ्रेशोल्ड के लिए ट्रू पॉजिटिव इतना है, 0.1 के लिए इतना है, 0.2 के लिए इतना है ट्रू पॉजिटिव रेट, और 0.3 के लिए 0.83 आ रहा है। व्हाई इज दैट, 0.83 क्यों आ रहा है इसको, एंड व्हाट अबाउट, सेकंड गाइस, ओके, इसको भी नंबर और डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। तो इसका ट्रू पॉजिटिव रेट 0.83 आ रहा है। लेट मी जस्ट चेक हियर, व्हाई हमने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, इसको बैक हियर, व्हाई इज दिस ट्रू पॉजिटिव रेट 0.83, true positive divided by true positive plus false negative, 0.3 है ना। लेट मी जस्ट चेक हियर वंस, सो 0.3 के लिए, सो 1 2 3, 0.3 के लिए it is saying that this is equal true threshold greater than or equal to, right? Okay, greater than or equal to, this is correct, greater than or equal to, 0 का 0 है, 1 का 1, okay,
check here one by one. Yes. Okay. Positive. Okay. Negative and false negative. Okay. 5, 3, 1, 1. True positive is 5. 0.2. कोई मिस्टेक किया क्या यहाँ पे हमने? So it is saying that this is what the value is. I think we made some mistake here. यहाँ पे कॉपी करते हुए कुछ तो गलत हो गया हमारे. This is so 0.21, 0.38, 0.49, 0.42, 0.30, 0.31, 0.38, 0.51, 0.45, 0.37. There's no mistake here. So how is this true positive rate 5 यहाँ पे? So how is this 5? True positive is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, just making this as 0. Makes sense. What it's saying is इससे जब ज्यादा होता है तभी वैल्यू उसकी 1 करनी है. ठीक है, it is equal, so this is 0. Okay, there's someone waiting in the session. ठीक है, so now it is correct. So this is 5 and this is 1. All right, so this is 0.83. Now it makes sense. All right, समझा ये वाला? नहीं. Okay, so what's happening is 0.83 से जब ज्यादा होता है तभी हमें 1 करना है. अगर 0.3 है, सॉरी 0.3 है, तो उसको 0 करना है. तो थ्रेशोल्ड इज 0.3. ये 0.3 से ज्यादा है क्या? नहीं, तो 0. 0.3 से ज्यादा है क्या? यस, तो 1. 0.3 से ज्यादा है क्या? यस, तो 1. 0.3 से ज्यादा है क्या? यस, तो 1. 0.3 से ज्यादा है क्या? नो, तो 0. ओके, 0.3 से ज्यादा है क्या? यस, तो 1. ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट द थ्रेशोल्ड. हमारा थ्रेशोल्ड है इस क्लासिफायर का. एंड देयर वी आर सेइंग कि 0.3 से ज्यादा रहेंगे तब हम लोग वी आर गोइंग टू से दैट इज गोइंग टू रेन. ओके, समझा अभी? बट कोड में तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला गया है ना. Okay, let's see the code. Greater than or equal to predicted labels, predicted probabilities is threshold. यहाँ पे राउंडिंग एरर आ रहा है कुछ तो भी. ठीक है, so this is greater than or equal to, but this threshold that we get here, let me just print the thresholds too. Mm, okay, so this is the threshold, right? Number, thing, put the threshold here. और उसके साथ साथ हम लोग करते हैं एक और चीज यहाँ पे, प्रेडिक्टेड लेवल्स भी कर देते हैं प्रिंट. Let's see what happens. Okay. So threshold is this. See here. So ये threshold है. This is 0.30000004 है यहाँ पे. Okay. So it is greater than 0.3, right? यस. Correct. इसलिए यहाँ पे इसका prediction 0 आ रहा है. Okay. Rounding error है वहाँ पे. Which can very well happen. Okay. Make sense? यस. Alright. So this is 0 because this basically is coming out 0.30000004 something. Yeah, this is coming out 0.300004. Okay. तो ये हो गया आपका टीपीआर और ये हो गया एफपीआर. नाउ ये टीपीआर और एफपीआर को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं. 0.83, 0.83 यहीं पे यहाँ पे कहीं तो है. ओके, और 0.75 यहाँ कहीं तो है. तो दैट इज दिस डेटा पॉइंट. ओके, यस. ऑलराइट. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट डेटा पॉइंट विच इज 0.4. ठीक है, तो सेम थिंग हम लोग करेंगे 0.4 के लिए. अभी इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ. ये हो गया 0.4. ठीक है, 0.4 है अभी. तो दिस इज 0, दिस इज कितना? 0, दिस इज 1,
This is 1, this is 0, 0, 0, 1, 1, 0. समझा कैसे किया ये? 0.4 से बड़ा जहां जहां पे है वहां पे हमने 1 किया, और उससे कम वैल्यू जहां जहां पे हमने वो उसको 0 किया. नाउ लेट मी गो टू हु इज गोइंग टू टेल मी. टीपीआर निकालना है हमको, and we want to fill the confusion matrix here. So Harish, let's fill the confusion matrix here. Yes, sir. Yeah. It's true positive is इसको हाईलाइट करता हूँ मैं आपके लिए. एक 4. 4, correct? Okay. What about false positive? False positive is 2. ठीक है 2. What about Sorry, 3, sir. कितना? It's 3. 3. 3. Okay. And false positive is False negative कितना है? false negative. Just one. Sir, 1 I think. ये सही है क्या? नहीं. कितना आना चाहिए वहां पे? 3. 3 सर. ठीक है. यस 3 है. और ये वाला false positive? Sorry, sir, वो 1 आना चाहिए. ठीक है. False negative 3. कितना? 3. 3. Okay. What about true negative? That is also 3. That is also 3. 3. Okay. All right. Now let's calculate these two. ये कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 3 divided by 6 कितना होता है? 0.5. करेक्ट. 1 divided by 4 कितना होता है? 0.25. करेक्ट. 2.5. ऑलराइट. तो TPR, SPR 0.5 और 0.25. लेट्स गो बैक टू आवर ROC कर्व. 0.5 कहाँ पर है TPR का? यहाँ पर है 0.5. 0.25 कहाँ है? यहाँ पे कहीं तो है. सो वो ये डेटा पॉइंट है आपका. ओके. ऑलराइट. Yes. Good. Yes. Now let's go all the way to 0.7. ठीक है. बीच में के स्किप कर देता हूं मैं. 0.7 पे चले जाते हैं and then we'll see what happens at 0.7. Okay. So let's just for 0.7. Okay, 0.7 पे क्या हो रहा है? सब 0 रहे सर वैल्यूज. तो वैल्यू 0 आ रही है. करेक्ट. यस सर. तो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? 0. ट्रू नेगेटिव कितने हैं? ये फॉल्स पॉजिटिव बता दो. ठीक है, ये 4 है. फॉल्स पॉजिटिव एक भी 6. प्रेडिक्शन नहीं है ना. एक भी प्रेडिक्शन चार. कहाँ होगा? ये तो There are no predictions which are 0. There are no predictions which are 1. वो 4 कैसे हो सकता है? Sorry, sir. What about false negative? All 6. Correct. All 6 correct. तो इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है अभी TPR की? FPR की वैल्यू कितनी आ रही है? करेक्ट. 0 0 राइट. yes. Now let's get back here and see where is that. That is this point
0 0। ओके, अभी इसके आगे अगर मैं कितना भी थ्रेशोल्ड बढ़ा लूं, मेरा 0.8 कर दूं, 0.9 कर दूं, 0.1 कर दूं, ये तो चेंज नहीं होने वाले, प्रेडिक्शन हमेशा 0 ही रहने वाले हैं, करेक्ट। तो ये डेटा पॉइंट चेंज नहीं होला, ये डेटा पॉइंट यहीं पे रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड्स चेंज करते जा रहे हैं और ऐसे डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ करते जा रहे हैं इस प्लॉट पे, और ये लाइंस को जोड़ रहे हैं ऐसे। फाइनली वी जस्ट जॉइन ऑल दिस डेटा पॉइंट्स, और ये हो गया हमारा आरओसी कर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं आरओसी कर्व। दिस इज हाउ यू बिल्ड एन आरओसी कर्व। Letting her in, but she's somehow not able to. Try again once. She's not here, right? Oh, you're here, Monica? Okay. Yes, All right, all right. Anyways, तो ठीक है, that is what ROC curve is. ये आपका हो गया ROC curve अभी, okay? ऐसा ये हमारा एक क्लासीफायर है, राइट। ये क्लासीफायर एक ही है ना, एक ही प्रेडिक्शन से यहाँ पे हो सकता है एक और क्लासीफायर में बनाऊं, हो सकता है मैं एक और क्लासीफायर बनाऊं जिसके प्रेडिक्शंस कुछ अलग हो सकते हैं। इट कुड प्रेडिक्ट 0.2 यहाँ पर है, तो मे बी इट विल प्रेडिक्ट 0.32 हियर, इट विल प्रेडिक्ट 0.45 हियर, इट विल प्रेडिक्ट 0.51 हियर, ठीक है। predictions will be different for a new classifier, so this is a new classifier, all right। तो ये हो गया मेरा पहला डिसीजन ट्री, उसके ये प्रेडिक्शन है। हो सकता है ये मेरा दूसरा डिसीजन ट्री है, उसके अलग प्रेडिक्शन रहेंगे। उसके लिए मैं सेम ऐसे ही करूंगा मैं, I'll just have different thresholds and I'll calculate the TPR and I'll calculate the FPR and I'll build this particular plot, okay, and I'll build this particular plot। उसका प्लॉट थोड़ा सा अलग दिखेगा, मे बी इट विल हैव डेटा पॉइंट्स हियर, सो मे बी लेट्स जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। आई जस्ट डू इट हियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, आई जस्ट चेंज दिस टू 38, let's change this to 48, I'll just change this to maybe 59, and maybe this one becomes 92, this one becomes 40, this one becomes 31, this one becomes 20, इसको 21 कर देता हूँ। जस्ट चेंजिंग सम वैल्यूज हियर, मैं प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो चेंज कर रहा हूँ बस, एनी नथिंग मोर और नथिंग लेस। 0.8 कर देता हूँ इसको, इसको कर देता हूँ 0.41, एक्सक्यूज मी, दिस इज ओके। अभी ये मेरा दूसरा आरओसी कर्व आ गया, ठीक है। सो दिस इज सेकंड आरओसी कर्व, ये मेरा पहला आरओसी कर्व है which is based on this predictions, and when I use the different model my predictions change and I get a different ROC curve now, okay। ये दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं, दोनों के प्रेडिक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। नाउ वी गो बैक टू दिस एग्जांपल जहां पे हमने बोला था कि ये जो कर्व है जितना ज्यादा इसके पास रहेगा उतना अच्छा, या फिर जितना ज्यादा इससे दूर रहेगा उतना अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों में से ये कर्व कुछ ज्यादा ये साइड में है, ठीक है। अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक में रखता हूं, इसको और इसको, तो कौन सा कर्व ज्यादा नियरर टू दिस टॉप लेफ्ट है, सेकंड और फर्स्ट? if I keep them side by side or if I keep them एक के ऊपर एक, first curve is this, second curve is this, which curve is more closer to this point? Second curve. Second, sir. Second, right? Okay, so इसीलिए this is a better classifier than this, okay। now ये तो हो गया आरओसी कर्व, लेकिन हमें क्या करना है, इस आरओसी कर्व से हमें AUC निकालना है। AUC is nothing but area under
योर आरओसी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर योर आरओसी कर्व। मुझे अगर इसके अंडर का एरिया निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस वन, all I have to do is just show an example. ठीक है, तो अगर मुझे एरिया निकालना है ये कर्व के अंदर वाला, इधर वाला एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे इसको ये करता हूँ। ये रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया कितना है कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं रेक्टेंगल का। ये पता है मुझे कितना है, ये पता है मुझे Yes. कितना है, आई कैन कैलकुलेट द एरिया। ओके, व्हाट अबाउट दिस ट्रेपेजॉइड, आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस, Yes, sir. करेक्ट, ठीक है, और मैं इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, करेक्ट। सो द एरिया अंडर कर्व इज area of this plus area of this plus area of this, that is the area under curve, which is 0.81 in this case. Okay, इस केस में एरिया अंडर कर्व हमारा है 0.81। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल में क्या हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल में हमारा सेम थिंग, आई जस्ट टेक दिस हियर, area under curve for this one is I just have to maybe take an area under this first. This is a trapezoid, ठीक है, इसके अंदर का एरिया निकाल सकता हूँ मैं, इसके अंदर का भी एरिया निकाल सकता हूँ मैं। ओके, and I can get the area under this as well. Okay, सम कर दो इसका, इसका और इसका, I'll get the area under curve, and in this case the area under curve is 0.65. Okay, तो अभी क्या करना है, ये जो दो अलग अलग आरओसी कर्व्स है उससे मैंने एयूसी निकाला, एक मेट्रिक निकाला, और वो एक मेट्रिक में अभी कंपेयर कर सकता हूँ। मैं हमेशा ऐसे तो नहीं कर सकता कि आपको मैं चार प्लॉट दिखा दूं और चार प्लॉट देखने के बाद ही आप डिसाइड करोगे। आप बोलोगे टेल मी अ नंबर, आई कैन नॉट गो एंड चेक द प्लॉट्स, और हमेशा आप प्लॉट्स भी बिल्ड नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस प्लॉट्स बिल्ट एवरीवेयर, यू कैन गेट एन नंबर व्हिच इज दिस एओसी कर्व, एओसी नंबर, एरिया अंडर कर्व। जितना बड़ा रहेगा एयूसी उतना अच्छा। ओके, AUC जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा, द मोर नियरर टू वन इज द AUC, दैट द बेटर द मॉडल। जब वन हो जाता है तो लेट्स इमेजिन कि आपका जो AUC कर्व है, सॉरी आपका जो ROC कर्व है कुछ इस तरह से है। इफ योर ROC कर्व इज इंस्टेड ऑफ दिस, इफ योर ROC कर्व लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसका एरिया कितना है, ये कर्व का एरिया कितना है, पूरा एरिया है ये, करेक्ट, पूरा एरिया है ना ये इस कर्व का, यस और नो, Yes, sir. कितना है वो, उसका उसका हाइट कितना है, वन, बेस कितना है, वन, 1. वन इंटू वन, वन, तो मैक्सिमम वैल्यू एओसी की कितनी हो सकती है, वन। 1. ऑलराइट, तो द मोर नियरर टू वन द बेटर द मॉडल, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गेट टू। अंडरस्टूड, एरिया अंडर कर्व में किसी को कोई भी डाउट, आरओसी में किसी को कोई भी डाउट? ग्रेट, तो जैसे मैंने बोला था एरिया अंडर कर्व इज नथिंग बट एक मैट्रिक मिलेगा जो आपको बता सकता है कि कौन सा मॉडल अच्छा है। यू, अगर आपके पास तीन चार मॉडल्स है, यू जस्ट कैलकुलेट द एओसी and find out whichever model having the AUC nearer to 0 1, that is the good model. Okay, ideal model would be a model which is trying to move towards the top left corner or trying to hug the top left corner point, okay, which indicates that there's a high true positive rate and there's a low false positive rate, correct। ये क्या है आपका false positive rate है, अगर डेटा यहाँ पर जा रहा है इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम है, करेक्ट, which is what we want because false positive is error, correct, false positive is error, true positive is good thing, all right। और ये जो है आपका रैंडम क्लासिफायर, इसका एरिया कितना है, दिस इज अ रेक्टेंगल, सॉरी दिस इज अ ट्राइंगल, तो इसका एरिया कितना है, हाफ इट्स टू बेस इनटू हाइट, कितना आएगा इसका एरिया, ये डॉटेड लाइन का एरिया अंडर दिस डॉटेड लाइन कितना आएगा, 0.5. 0.5, करेक्ट। सो दैट इज द रैंडम क्लासिफायर, दैट्स व्हाई रैंडम क्लासिफायर का 0.5 आता है। दैट मींस there is no discrimination power, it cannot discriminate between positive and negatives, it's as
equivalent as saying that it does not have any discrimination power. Okay. Ideally, कोई भी मॉडल जिसका AUC less than 0.5 रहेगा, it is a bad model. You rather not have a model. अगर AUC 0.5 से कम आ रहा है तो इससे अच्छा मॉडल ही मत यूज करो. Just let it run as it is. Just do a coin flip. It's much better than the model. Okay. All right. Now let's go to the advantages of ROC and AUC. तो सबसे पहले एडवांटेज, इट्स इनसेंसिटिव टू द क्लास इम्बैलेंस. मतलब अगर आपके डेटा में पॉजिटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव्स. फॉर दिस एग्जांपल, यहाँ पे कितने पॉजिटिव्स, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है. यहाँ पे 0 एग्जांपल्स है, which means your positive is more than your negative. 60% data points are positive and 40% are negative. It could also happen कि आपका डेटा में 90% positive, 80% positive हो जाए, only 2%, 20% negative रह जाए. Okay, that could also happen. It happens in many places. You'll see many imbalanced data sets. ROC और AUC कर्व से क्या होता है, ये imbalanced data set भी रहा तो भी काम कर लेगा. You can still compare your models. Okay. Second is now that you know this is what the plot looks like. Okay, now that you know this is what your plot look like, you can pick थ्रेशोल्ड. आप लोग सबसे पहले तो आप मॉडल पिक करोगे. यू विल पिक अ मॉडल व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट AUC. उसके बाद में अगर आपने AUC उसका ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में AUC अगर आपने ड्रॉ कर दिया, यू कैन पिक अ थ्रेशोल्ड. यू कैन से माय थ्रेशोल्ड इज दिस, और माय थ्रेशोल्ड इज दिस, और माय थ्रेशोल्ड इज दिस, या फिर माय थ्रेशोल्ड इज दिस समवेयर. ठीक है. एंड हाउ डू यू पिक द थ्रेशोल्ड? यू पिक द थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन व्हाट इज योर यूज केस. अगर आपके केस में ट्रू पॉजिटिव रेट इज इंपॉर्टेंट, then you will pick this as a threshold. ये डेटा पॉइंट जब ड्रॉ किया था तब थ्रेशोल्ड क्या था, वो थ्रेशोल्ड आप लोग पिक करोगे अगर आपको ट्रू पॉजिटिव रेट इंपॉर्टेंट है तो. अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव रेट इंपॉर्टेंट है, then you'll check. Sorry, I think I said something opposite. Okay, and if you are okay to make some of the mistakes, then maybe you'll pick some this as a threshold. Okay, so that's what the goal is. So ये thresholds पिक कर सकते हो आप आपके ROC कर्व से. और the model that you check, you can try various thresholds and build that and just get an AUC, and AUC will give you one single value to compare. Disadvantages क्या है? It is insensitive to class probabilities. का मतलब होता है कि क्योंकि अभी हम लोग एक थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट 0.3 इज द थ्रेशोल्ड, उससे ज्यादा जो भी वैल्यूज रहेंगे वो सबको मैं 1 कर रहा हूँ. ठीक है. हो सकता है किसी का वैल्यू 0.1, 0.31, 0.32 है. आई एम सेइंग that prediction is as good as the prediction of 90%, correct? Which is kind of uh, washy, because now you are saying that anything which is greater than 30% is equivalent, is 1. And if there's a prediction which is 0.31, which is maybe there's a prediction which is 31%, and there's a prediction which is 80%, right? Both cases में you are saying that there is a chance of going to rain. All right, but ये जो 80% है, it is higher chance, and you're putting both of them in the same basket. All right, so this is one of the issues, one of the disadvantages कि you are not considering the probabilities anymore. You are washing out the probabilities and you're only focusing on the prediction ranks. Okay. Second is the cost. Cost के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की है हमने. Cost is the cost of false positive या फिर the cost of false negative. Okay. जब आप कोई मिसक्लासिफिकेशन करते हो तब उसको कॉस्ट एसोसिएटेड होता है. अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं हमारा इसका, there is a misclassification. If the classifier says that there is no enemy ship, there is no enemy aircraft, and there is an enemy aircraft, okay, then that's a false negative. And उस केस में people are going to die because they'll come and they'll bomb that area and they'll go away. ठीक है, the people are going to die. So there's a cost related to it. The cost is the lives of the people. Sometimes the cost could be
in dollars. So maybe अगर आपको कोई classifier बनाना है, and that classifier is going to classify if a particular person is going to buy my product or not. Okay. Now the cost is, if he's going to buy my product, I have to send him some offers. Only then he's going to buy. Okay. Now the sending out the offer itself is going to have some cost to it. Firstly, my time. Second, if I'm sending some paper items, then maybe the cost of printing, the cost of ink, the cost of posting, all of that is present, right? So cost is not used anywhere in this calculation. So cost is completely ignored. That is another disadvantage. अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कॉस्ट को कैसे यूज करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट, सो डोंट वरी. नेक्स्ट, व्हेन टू यूज आरओसी एंड व्हेन टू यूज आरओसी एंड एयूसी कर्व्स. तो सबसे पहले तो जब आपको मॉडल कंपेयर करने होते हैं, multiple models, you use ROC AUC. You can compare different models and select which is the most effective model. If there's a imbalance in data set, then you use the AUC ROC. And you used AUC ROC in the binary classification problem, which is pretty obvious. Okay, which is what we started out with. Any questions on this one? Any questions on AUC ROC? Anything that you did not understand? Very important topics, pretty commonly asked, also confusing because textbook में दिया है, but I'm not sure how much you guys may have understood after reading it. So